friends, welcome back to this question series. Let's quickly take up another question. This question was asked in GATE 2019. So firstly we need to read the statement of the question. By the simplex method, the optimal table of linear programming problem. So we are given a linear programming problem. Maximize z equals to alpha x1 plus 3x2 subject to we are given these two constraints and the non-negativity restrictions where alpha beta gamma real constants is. So this table is the optimal table given to us. We need to find the value of alpha plus beta plus gamma. So to find the value of alpha plus beta plus gamma, we need to know the value of individually alpha, beta and gamma, and then we can simply add them and write the final answer. So ultimately first we need to find the values of alpha, beta and gamma. So here is alpha, here is beta and here is gamma. So this is a specific kind of question in which our LPP is given to us, but it is given in incomplete form. It is given in the terms of some unknowns. However, the optimal table is completely known to us. So in this case, in this kind of questions, we use the technique of B inverse. We compute B inverse and then using some relationships which exist, we can compute the values of these unknowns. So let's see how to do this. So first of all हमें B inverse की value read करनी है which is basis matrix का inverse. So basis matrix का inverse हम read करते हैं starting के basic variables में because ये जो table given है optimal table given है जो सबसे पहले basic variables रहा होगा starting में उनके columns को देखकर हम read करते हैं. तो since you can see from here कि जो x3 और x4 हैं वो objective function नहीं आ रहे हैं so they are playing actually the role of slack variables here. So starting में slack variables ही identity बनाते हैं so ये x3 x4 ही हैं जो starting के basic variables हैं. So that means इनके ये जो columns हैं ये वाली part this is B inverse. So this is our B inverse 2 -1 -1 and 1. So how to read B inverse? कि starting में जो basic variables होते हैं slack variables उनके आप optimal table से columns read कर लीजिए in the same order. So once we get the B inverse हम खुद formulas use करके values निकाल सकते हैं. अब ये हमारे पास है 6,2. So ये first relationship which we are going to use is XB is B inverse B. So XB is the solution which is known to us 6 2. B inverse we have just found 2 -1 -1 1 and B is your original right hand side. So original right hand side is 8 and gamma. So ये रिलेशन हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी ओरिजिनल राइट हैंड साइड में एक अननोन है गामा अननोन है. तो अब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और गामा की वैल्यू निकालेंगे. सो वेरी इजीली वी कैन सॉल्व. सो 6 is equal to 2 minus 8 sorry 6 is equal to 2 into 8 minus gamma that is 16 minus gamma and 2 is equal to minus 8 plus gamma. So obviously whichever you use you can find the value of gamma. So gamma clearly is turning out to be 10. So हमारे एक अननोन की वैल्यू हमारे पास आ गई है गामा की वैल्यू 10. अब हमें अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं. अब you see where beta is coming. Beta is coming as the column vector of the coefficient vector of variable x1. So ये भी एक relationship होता है that column vector is B inverse times the original column vector. किसी भी टेबल पे आप हो उस टेबल में जो किसी भी वेरिएबल का कॉलम वेक्टर है इट इज इवैल्यूएटेड और कनेक्टेड विद द ओरिजिनल कैपिटल A is the original one. B inverse times that. So alpha j is the column vector of x1 in this table in the optimal table which is 1 0. So 1 0 vector is B inverse time. B inverse means 2 minus 1 minus 1 1. The original column vector. Original column vector है हमारा beta 2. So this is beta 2. तो इसको भी यूज करके हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. So 1 is equal to 2 beta minus 2. This gives me that 2 beta is 1 plus 2 3 which gives me the value of beta is 3 by 2. सो बीटा की वैल्यू भी डिटरमाइन हो गई है. अभी हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है अल्फा की. सो अल्फा कहाँ पे आ रहा है? अल्फा आ रहा है कॉस्ट में और कॉस्ट का कनेक्शन होता है सिंप्लेक्स टेबल में zj माइनस cj के साथ. सो यहाँ पे अगर हम एक cb वेक्टर कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल वेक्टर लिखेंगे तो x2 की कॉस्ट है 3 और x1 की कॉस्ट है अल्फा.
तो हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स का zj माइनस cj यूज करके अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. बेसिक का यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो है, वहां से कभी भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आएगा. आपको नॉन बेसिक का zj माइनस cj यूज करना है. So we know what how the zj minus cj's are calculated. This is cb vector multiplied by this vector minus original cost minus cj. So हम use करेंगे x3 के लिए. So for x3 this is the vector 3 alpha cb vector multiplied by the column vector which is 2 minus 1 minus the original cost we know of x3 का original cost 0 है is equal to 2 this value जो zj minus cj हमारा लिखा हुआ है. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे so we'll get the value of alpha. So it's 6 minus alpha is 2, so alpha is 4. So we get alpha, beta and gamma individually and now we simply add them and write the value over here. So this number is 4 plus 3 by 2 plus 10. which turns out to be, आप numerically लिखना चाहते हैं decimal में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. So it's 15.5. So that's all about this kind of question. So we'll see you next in the next video.